Hey, LeetCode contest. After a long time, long exam. रिकॉर्ड तो हो रहा है हाँ स्टार्ट हो गया minimize string length. First question is something related to string. We are given a zero index permutation of n integer nums. The permutation is called semi-ordered. If the last number, if the first number equals to 1 and the last number equals to 1, you can perform the below operation many number of times. Nums by the semi-ordered permutation. Pick two adjacent elements in nums and swap them. Okay, so it is just that one should be in the n and four should be in the r. So हमको 1 और 5 की पोजीशन देखनी है जो भी एंड तक होगा आई गेस वो सॉर्टेड होगा 1 should be in the beginning 3 should be in the last ठीक है int index 1 equals to -1 int index 2 equals to -1 or int I equals to 0 less than I plus if nums of I equals to 1 index 1 equals to I if nums of I equals to n index 2 equals to I so मैंने index कैलकुलेट कर लिया अब suppose while I is greater than equals to 1 while index 1 is greater than equals to 1 swap v of index 1 comma v of index 1 minus 1 and I'm doing answer plus plus and index 1 minus minus so first of all I'm bringing that index over there and while index 2 is less than equals to index 2 is less than and minus 1 what I can do is I can swap index 2 and index 1 I'm doing answer 2 and index 2 plus plus return answer int n is equals to nums dot size here it should be v here it should be v here it should be v लैग हो रहा है ओबीएस के कारण फाइन फिनिश 240 ओके यहाँ पे टू थ्री जीरो and it's working fine let's see you are given a zero index integer nums of array and queries where index type okay type दिया and index again where दिया okay so query वाला कुछ सीन है this is third problem where is the first problem then what first problem is medium you are given a zero index string as repeatedly perform the following operation a number of times choose an index I in the string and let c be the character in ith position delete the closest occurrence of c to the left of I and the closest occurrence of c to the right of the I if any calculate the your task is to minimize the length of an s by performing the number of operations okay
So it should be 3, it should be 3, should be 2. So it is just like a number of unique characters, I guess. Char C for auto and ins. What I can do is I can just insert I, return C dot size. I'm not sure. I think it should work because if any occurrences will be there, then it should be 3, 3, and 2. I think it's working fine. Okay, it was not a medium problem. Okay, I think this is done. Queries of the type of 0. Set the value of row at index equals to y and override the previous value. Okay, and type 1. Set the value at column with index to val. Okay, so I think this is pretty simple. Don't have to do anything because here it is 0 type. So what I am doing is index is 0. Okay, so I have to do whole row value, no? Okay, it's simple because mm, okay, okay. So I have to set whole row over here as 1. Here I have to set it as 2. Okay, so mm, 3 cross 3 matrix, and what is n? N is 10 to the power 4. Okay, to update the row. Suppose if the row value is already there, then I can do n plus 1 and n plus 1. What I can do is I can do plus 1, minus 1. I can move on to the rows and move on to the columns, and then I can change the value, I guess. Uh, just 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. What I can do is I can get 1 plus 1, here to minus 1. Here it is like 2. So this is plus 2, this is minus 2. Okay, I have to change the value. I don't have to add exactly over there. So the last operation matters. ओके ठीक है ये इनिशियली यही कर रहा है कि वो पूरे रो को अपडेट कर रहा है सो डजेंट मैटर कि एंड में क्या होगा क्योंकि अगर मान लो कि रो आती है और कॉलम अगर मान लो कि 2 यूनिक कॉलम्स आ गए ऑलरेडी ओके इट सीम्स गुड आई गेस बिकॉज अगर रो एक भी वैलिड है और अगर वो सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है आई गेस अगर मान लो कि सेट के अंदर प्रेजेंट है तो लास्ट में वो काउंट हो जाएगा तो स्ट्रांगली रिकमेंड होगा कि पीछे से आइटरेट करा ले हम and what I can actually do is make a number of rows used and make the number of columns used. I think this will work. Let me try run this one case I guess. अगर मैं रो ऑफ सेकंड मतलब सेकंड रो के अंदर
ओके 0 1 2, तो सेकंड रो के अंदर अगर मैं 1 1 1 डाल दूँ 3 इंटू 1 मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि एन रो माइनस रो की साइज होगी। ये 2 के लिए मुझे करना होगा, अगर मैं सेकंड रो, सो ओके आई थिंक दिस सीम्स टू बी set in row, set in column. Okay, so I think this is query, so I will put it as b long int answer equals to 0. What I can actually do is I have to iterate it from the leftmost index. What I will actually do is if v of I of 0 equals to type 0, like this is for row and this is for column, I guess 1 is for column. Okay, I guess yes, 1 is for column. What I will actually do is if column dot count of v of I comma 1 है, अगर काउंट नहीं है तो insert v of I comma 1 and answer plus equals to and minus r dot size, मतलब उस रो के अंदर हमने जो अगर अपडेट किया है, आई थिंक ये पॉइंटर रिटर्न करेगा, तो हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, स्टार v of I of 1 आई गेस 2। सेम चीज़ अगर रो के लिए हम ट्राई करेंगे, तो अगर रो के अंदर काउंट 0 है, रो के अंदर काउंट वो है, सो हियर हम लोग कॉलम की साइज देखेंगे और इसको कर देंगे रिटर्न आंसर। Most probably this should work because I am just calculating rows and column 23 and 17. I think this should work. Just the problem is what I can actually do is I can convert it this to long, so it won't make any trouble. 1 LL star. Yeah, fine. I think this should work. Queries, and I am taking it. Okay. Oh, can was given to us, so fine. Let's try. Okay, works good. Oh, not a very bad position for me. It seems to be working fine. Fine. Let's move. You're given a two non-numeric strings nums and nums1 and nums2 and an integer max nums and min num. Okay, so two nums are given and maximum nums and minimum num is given. You have to denote an integer x to be good if, okay, so it should be in between them and the digit sum. Okay, I think simple DP. Oh, okay, they are providing a string. in fine. And about 22, it means the length should goes to 22. 10 to the power 22. It means in merely storing long int store 10 to the power 22. I guess it probably does 10 raised to 22. Okay, suppose 2 raised to 64 is, okay, it's 19 and 120. E to the power 19 and 1 9. Okay, 19 20 64 66. Okay, so I think DP will work over here, but the only problem with DP is how will I store? Most probably what I'm thinking is if string, okay, working done with prefix should work.
कहना तुमसे. Seems like many people. It's just 173. It was not that typical, I guess, because rows and columns count was required, else I think nothing was very much fine. Okay, I think DP will work good over here, but it is just that on that position I have to add the index and mean and maximum I have to pass it over there. So as soon as I cross the particular index limit, I have to be very careful with that. So okay, so maximum length I have to calculate, and for that particular index, what I can actually do is there should be two minimum parameters I'm searching. The one is index, and the one is like the string should be of length n. And like what if I know that for this particular index and for मतलब पहले दो लेंथ या तीन लेंथ के इंडेक्स तक इतने सम की वैल्यू इतनी है, so I can drag this. हाँ, इतना कुछ कहना है तुमसे मैं कह ना सका. इट इज जस्ट दैट मुझे स्ट्रिंग तो जनरेट करनी ही नहीं है, बिकॉज स्ट्रिंग जनरेशन में ही दिक्कत है. अगर 10 टू द पावर 22 है नम्स की वैल्यू, सो इट इज श्योर दैट मुझे इसके अंदर डीपी लगानी पड़ेगी. और अगर मैं इंडेक्स पास करता हूँ, मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर इंडेक्स अगर मैं वैल्यू एक सफिशिएंट ले लेता हूँ, अगर मैं इक्वल ले लेता हूँ, देन इट इज आई थिंक 10 टू 22 नम्स में भी स्टोर नहीं होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. That's a problem because इसको मैं string to long long में convert ही नहीं कर सकता. So like this makes me one thing clear that conversion to integer won't work over here in any case if I try any probable case over here. Okay, this looks good. What we do is if I'm using DP, then one of the numbers should be, see, max and mean sum is less than equals to 400. So the maximum state which I can here form is that one state will be of 400, and that's for sure. That I can do. Okay. How I will manage that index part? That's the big question.
Mm, Managing the index part will be done if at any position I use the value less than that from the previous version. If I'm using the value less than that, then okay, this will work. This will work. Fine. This will work. Like for all the values, what I can actually do is I can pass a 00 like a dash dash index. For this index, I can actually do is I can make this both the indexes same, and for this I can run something like here I can use 1. Seems to be a good question. So if I figure it out how I will work with index, then I think most probably the question is pretty simple to me. So suppose if a number minimum is 55, what will be my thinking process if minimum is 55, maximum is 65? So I have to start with this index as okay. So for the first index, I have the maximum constraint as from the starting position to the position which I want to go over there. Okay, so if I have the position to go over there, then what I can actually do is if it is 0 or if it is दरवाजा हो गया ग्रुप फोर चल जाएगा तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आराम से सिंपल सेट यूज करना मतलब मैपिंग यूज करनी है कैसे सोच ना अभी टाइम है ओके सो तो बाजू में शिफ्ट हो जाएगा मैं हल्का सा बोलूंगा तेरे को डिस्टर्ब हो जाएगा इसीलिए तेरे को दिक्कत ना हो तो बैठ जा मतलब मैं थोड़ा बोल के बोलूंगा ओके सो I can make three state three state like one state will be 0 and 1 so it doesn't make any problem to me I think it's fine अगर मैं उस इंडेक्स से स्टार्ट करता हूँ जिस इंडेक्स पे अगर 0 और 5 के बीच में अगर कुछ भी ले सकता हूँ ठीक है तो मैं क्या करूँगा अगर मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ then there should be at least one index जिनकी स्टार्टिंग पोजीशन मैं 1 से करूँ the string index will work. String passing won't work because string passing means like I'm generating the string. So that is not possible. This is a DP straightforward DP problem, I guess, or some optimization one.
Okay. Okay. First of all, I have to figure it out. So let's start as per convenience. T is minimum and this is maximum. Seems to be working fine. While s dot size is not equals to t dot size, what I will actually do is s is equals to 0 plus s. Okay. Then I will return answer, comma, suppose s and t will be my there. This is mean and max will be my there. So this will be my sum. Fine. This will be my this all things are constant. Then this will be my index, and this will be my sum. So I think these are the two parameters I'm thinking about. And suppose if I'm forming a DP, then it would be a size of 23, and the summation size which I'm taking is max of 400, so 401. This will be my DP size. Most probably, like I'm thinking of DP, so that's why I'm forming constraint like this. Okay. वन से लेके फाइव मीन मैक्स वन से लेके फाइव होना चाहिए दैट दिस सीम्स टू बी वर्किंग फाइन अगर मैं वन लेता हूँ तो मिनिमम सम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नहीं आएगा टेन आ जाएगा क्योंकि नाइन के अंदर क्या होगा कि एज सुन एज आई क्रॉसेस नाइन द मैक्सिमम सम विल इंक्रीज सो दैट वुड बी अ ट्रबल मेरे को सिर्फ ये देखना है कि मैं मीन मैक्स कैसे हैंडल करूंगा अगर मैंने मीन और मैक्स हैंडल कर लिया मतलब एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर मुझे अगर स्ट्रिंग को अगर मैं स्टार्टिंग ही जीरो से कर रहा हूँ मतलब उससे छोटा या उससे इक्वल से कर रहा हूँ मैं कोई भी एक इंडेक्स को पिक करता हूँ जो कि इससे इक्वल होगी आई एम सेलेक्टिंग दिस इंडेक्स जो कि इससे इक्वल होगी एंड लगता है पेन पेंसिल चलाना पड़ेगा दिस शुड बी जीरो वन एंड टू
Okay, this looks good, I guess. I'm not sure whether this will work or not, but yeah, int answer of string and s, comma, string and t, comma, int max, comma, int mean, comma, int idx, comma, int sum. Okay, so if let's suppose if sum is greater than mx, because this is mean, return 0, else if sum is greater than equals to mean, index is equals to t dot size. Suppose if index is equals to t dot size, then if sum is greater than equals to mean and then sum is less than equals to mx, return 1, else return 0, else if dp of index comma sum is not equals to minus 1, dp of index comma sum, else int start equals to, okay, so here it is int top int bottom मतलब नीचे वाली string, if int start int end, if top equals to 0, it means that like suppose I am taking top equals to 0, it means that अभी तक की जितनी भी top की string है वो same है, तो हमको at least starting character तो वही लेना पड़ेगा, उसके अलावा हम कुछ नहीं ले सकते. So start equals to
एस ऑफ आई माइनस 0 एल्स स्टार्ट इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही सेम चीज हम बॉटम के साथ करेंगे कि अगर मान लो बेटा कि अगर मेरा बॉटम मतलब नीचे की स्ट्रिंग अगर 0 है, मतलब अभी तक इक्वल ही है, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट इक्वल्स टू एस ऑफ आई, मतलब यहाँ पे टी ऑफ आई होगा, टी ऑफ आई माइनस 0 एंड दिस शुड बी एंड। वरना मैं एंडिंग, अगर मान लो कि एक भी वैल्यू ऐसी है जो कि अभी भी नीचे वाली वैल्यू, मतलब मान लो कि ऊपर की वैल्यू कुछ भी, नीचे की वैल्यू मान लो 2 3 4 है, तो अभी मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, सो इट शुड बी एटलीस्ट कि अभी मैं 4 से ज्यादा नहीं ले लूंगा। अगर मान लो कि यहाँ पे 2 3 4 है, मैंने 2 लिया, उसके बाद मैंने वापस मान लो 2 लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे लिए 0 से लेकर 9 तक के ऑप्शंस खुल जाएंगे, तो एंड विल बी इक्वल्स टू 9। okay, or else n will be equals to what the particular thing over that is. Okay, so n will be equals to that, and okay, so what I can actually do is for int I equals to start, I is less than equals to end, I plus plus. Okay, suppose मैं इन दोनों के बीच की वैल्यू लेता हूँ। ओके, यहाँ पे बहुत से केसेस बनेंगे कि सपोज मेरा अगर मान लेते हैं कि ऐसा होता है कि स्टार्ट 0 आ जाता है, एंड 0 आ जाता है, देख फॉर द सिंपल केस ये तो सही है, बट अगर मान लेते हैं कि 1 1 1 है, यहाँ पे 3 3 3 है, सो मैंने यहाँ पे 1 लिया, सो फॉर दिस मैंने जैसे ही 1 ले लिया, यहाँ पे 3 के लिए वैल्यू सेट हो जाएगी, देखो इफ I is equals to start if I is equals to start and I equals to end, मतलब अगर दोनों की वैल्यू सेम है, ऐसा अपन मान के चलते कि अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, इफ आई इक्वल्स टू स्टार्ट एंड आई इक्वल्स टू एंड, अगर मान लो कि दोनों की वैल्यू सेम है, सो आंसर प्लस इक्वल्स टू, सॉरी, solution plus equals to answer of h comma t comma mn comma mx comma index plus 1. Okay, this should not be I, this should be index plus 1 comma sum minus I comma टॉप की जगह पे अभी भी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, so this should be 0.
अगर मेरा टॉप इक्वल्स टू 0 है, मतलब अभी तक टॉप मेरा हिला नहीं है, एंड आई इज इक्वल्स टू स्टार्ट है, मतलब अभी तक जो भी स्टार्टिंग पोजीशन की वैल्यू है देन टीपी इक्वल्स 0, एल्स इफ top equals to 0, top equal TP equals to 1. If bottom equals to 0 and I equals to end, मतलब ending के equal हो जाता है, तो मेरा BT जो होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि अभी तक वो 0 ही था. Else if अगर bottom equals to 0 है तो BT equals to 1 हो जाएगा. Solution plus equals to answer of S comma T comma Mn comma mx comma index plus 1 comma sum minus I sum plus I comma TP comma BT. I think this should work. अगर टॉप है, अगर ऐसे T है, अगर दिस इंडेक्स सम टॉप, there should be many errors. Let's check. Okay. Okay, first one is working fine. I don't think this will work. Second one is also 5. Okay. Let's take a big string, 10 to the power 12 and 1. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. For this, if I want the sum equals to 1 and minimum is 1 and maximum is 1. Let's see. Okay. This works because I think this should work because the modulus values are the mod I haven't defined. Okay, again how? Line 17.
Okay, so bottom value is coming out to be something else. सिर्फ 21 आ रही है। ओके, सिर्फ 21 ही आएंगे क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 21 आएगी या फिर एक और 10 करके देख लेता हूँ, तो मेरे को डाउट क्लियर हो, अगर दो आंसर आता है तब तो ठीक है। दिस इज वर्किंग फाइन, दिस इज वर्किंग फाइन। लेट्स ट्राई इट वंस मोर। ओके, 11 and 5 थिंक सो दिस आर नाइस। Okay, fine, thanks, thank you for watching the stream.